Dr. Shivam Shingla. Sir is an academician, an excellent clinician, an excellent. What you need to understand about Dr. Shivam is when patient comes out of his clinic, the stress factor is gone. Many a times you hear the patients talking that मैंने बोला था ना, देखो सर भी यही बोल रहे, अब आप करो. So ये at such a young age, what he has accomplished is mind-boggling. And I just wanted to say you, sir, it's been 25 years plus for me in oncology space, and I've been privileged to be a part of this journey. And I can say that the future and the current is absolutely in a fantastic hand. And that's because great clinicians like you, who go beyond the call of the duty to conquer cancer. And all of us are together with you. We have come together for a better tomorrow, so that in the year 2030, 2040 and 50s, we know what would be the cancer care of this country. So thank you, sir, for taking out your precious time to address all of us, especially for the new joinees from the Management Graduate Institute. I'm still finding some trouble with my slides. Can somebody help me with this? Ashish, if I stop sharing, can you log in with this so that I can talk? Any one of us? Just a second, sir. Ashish, are you doing or should I do it? Amit, you do it. Yeah. Yeah. My slides visible, sir? Yeah, your slides are visible, Amit. Go back to go to the second slide, please. You see the, yeah, put into the PowerPoint mode, please. Yes. So MBBS from Government Medical College. So it's a merit seat. Information number one. MD from prestigious, go back to the second slide, please. Yeah. MD from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Faizabad, DNB, and then lung cancer specialty training from University of Zurich, one of the prestigious institute. Next slide, please. Currently, sir is consultant medical oncologist at Nanavati Super Speciality Hospital, SL Raheja Hospital, Shushruth Hospital, and Surya Hospital and Hinduja Hospital. All these are state-of-the-art hospitals. He is certified in medical oncology from ESMO. We all know what is ESMO, and more than 10 decades, more than 10 years of clinical experience. And we were just back calculating, sir, you have already touched more than 11,000 plus families' life in this 10 years. Next slide, please. So it's our way to say, a very young guru in the field of cancer, and it's an honor and privilege to hear from you, sir. Over to you. Thank you, Dr. Manoj. Meri strength, the way I say Meri strength in oncology is in communication. Where I communicate well, chahe representatives ho, chahe patients ho, and that is my core strength. In 10 years of my experience in oncology, जहाँ पे मेरे contemporaries एक या दो hospital में consultant है, I am consultant in 7 hospitals, and all of them मेरी जान के पीछे भागते रहते that I sort of spend time there. But I can tell you honestly, my strength is communication, and वो मैं आपको दिखाता हूँ. That I will communicate to all the attendants here. उनसे सब बात करूँगा तो I'll tell them कि what is cancer और हमें क्या करना चाहिए. So let me share my screens if you allow me. So hi guys, मैं डॉक्टर शिवम हूँ. मैं प्रैक्टिस करता हूँ बॉम्बे के ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में. आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मैं मिलूंगा वहाँ पे. एंड टुडे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैंसर के बारे में. आई विल ट्राई टू टॉक बोथ हिंदी इंग्लिश. मराठी तो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है.
आई नो लिट मोर देन बांग्ला. बांग्ला ज्यादा आती है कंपेयर टू मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग सब हिंदी बोलते हैं, सो आई एम मोर कंफर्टेबल हिंदी में. सो आज का मेरा टॉक का थीम है आओ टेस्ट करें, एंड मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या टेस्ट करना है और क्यों टेस्ट करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर. कैंसर है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई कैंसर है क्या. ऑन्कोलॉजिस्ट तो बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं क्लिनिक में, बट किसी को समझ नहीं आता है. मेरे क्लिनिक से निकलने के बाद भी अगर मैं लोगों से पूछूं कि कैंसर क्या है, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इनको क्या समझा. सो कैंसर एक घबराने वाली इलनेस है. वाई? बिकॉज हम सब लोग अपनी लाइफ में एक इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी की फीलिंग के साथ जीते हैं. सो मेजोरिटी ऑफ अस वी फील कि वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल, हमें कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी. एंड जैसे ही कैंसर डायग्नोसिस बनता है, दैट फीलिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी की हमें कुछ नहीं हो सकता है कभी भी, वो चली जाती है. एंड आई एम टेलिंग यू, वो सबसे बेकार फीलिंग है पूरे वर्ल्ड में. इट्स लाइक अगर मुकेश अंबानी को कल बोल दिया जाए कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में जीरो मनी है एंड अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस वैसी फीलिंग पेशेंट्स को आती है. आई मीन दे आर एट द टॉप ऑफ द चेन, पेशेंट्स अपनी चेन के टॉप में है, एंड वन डे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता है कि अभी कैंसर हो गया है, सो अभी सब कुछ खत्म होने वाला है. यू नो, पेशेंट के मन में वही आता है, चाहे मैं कुछ भी उसके बाद बोलूं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, देयर आर गुड चांसेस ऑफ क्योर, 70% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग मन में इमीडिएटली आ जाती है. कैंसर में होता क्या है, आपकी बॉडी के अपने सेल्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं अनलिमिटेड स्पीड से. अगर आपके हेयर ग्रो करते हैं और आप उसको हफ्ते में महीने में एक बार काटते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज ग्रोथ है. बट अगर यही हेयर इतनी स्पीड से ग्रो करने लगे कि डेली डेली की डेली वो 100 सेंटीमीटर ग्रो कर जाए, तो आपकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन खींच लेंगे. आप उस न्यूट्रिशन को ग्रो अप करने के लिए पेस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड आपके लिए बहुत कम्बरसम होगा, एंड इट विल लीड टू डेथ. इवन सिंपल हेयर ग्रोथ एट 100 सेंटीमीटर पर डे. कैंसर में ऐसे ही होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इतने रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो उन सेल्स का अनलिमिटेड हो जाता है, बाकी सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह कुछ मिल नहीं पाता. तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैंसर होता क्यों है. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. कैंसर क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण कैंसर का टबैको है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर कॉमन है. यहाँ पे लीडर्स की फैक्ट्रीज हैं टबैको की, और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया ही ऐसा कंट्री है, इंडिया और थोड़ा सा अपना म्यांमार साइड, जहाँ पे ओरल टबैको, च्यूएबल टबैको मिलता है. अदरवाइज इफ यू सी ओरल टबैको पान जर्दे की फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है. ठीक है. सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है कैंसर का ओबेसिटी. वर्ल्ड में एक पेंडेमिक है ओबेसिटी का, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हाई कैलोरी फूड्स बहुत इजीली अवेलेबल है, कोक बहुत इजीली अवेलेबल है, और हमारी लाइफ एक बहुत ही डिफरेंट डोमेन में चलती है. हम आजकल ड्राइव करते हैं वॉक करने की बजाय, हम वॉक पे भी गाड़ी से ही जाते हैं. एंड अगर हमें कोई घूमना होता है तो हम बोलते हैं यू नो एक चक्कर लगा देते हैं गाड़ी से, एंड वी से चलो हम चक्कर लगा के आ गए. लिफ्ट से चढ़ते हैं, स्टेयर से नहीं चढ़ते, और स्केटबोर्ड्स, मतलब कहीं पे भी कोशिश करते हैं कि हमें चलना ना पड़े. तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाइट बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है. थर्ड मोस्ट कॉमन कारण है कैंसर का इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से लिवर कैंसर होता है. सर्विक्स का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है. और फोर्थ मोस्ट कॉमन कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रेडिएशन, स्ट्रेस. सो अगर आप देखें इसमें से 50-60% कैंसर के कारणों को हम अवॉइड कर सकते हैं, एंड यही लोग समझते नहीं है इस बात को. मतलब मुझे क्लिनिक में आके पूछते हैं कि कैंसर क्यों हो गया, मुझे समझाओ, एंड वो समझते नहीं है कि 70% कैंसर के कारण अवॉइड करने हमारे अपने हाथ में है. तो हमें करना क्या चाहिए, हमें स्क्रीन कैसे करें कैंसर के लिए. आपको जान के हैरानी होगी कि कैंसर स्क्रीनिंग, लोग बोलते हैं भाई मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो यंग हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे क्यों कैंसर होगा. बट कैंसर स्क्रीनिंग ग्लोबली 21 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, और मेन में ये स्क्रीनिंग 40 या 50 इयर्स की एज में स्टार्ट करनी पड़ती है. मतलब इट इज सो अर्ली. मेन को कोलोन कैंसर के लिए 50 इयर्स की एज में हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए.
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें स्क्रीनिंग और लानी चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग 30 इयर्स की एज में स्टार्ट हो जाती है। सब वुमेन को एट द एज ऑफ 30 इयर्स स्क्रीनिंग करना चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम जस्ट सब वुमेन को 30 इयर्स में स्क्रीनिंग करना चाहिए। सेल्फ स्क्रीनिंग होती है उस एज में। फिर 40 इयर्स की एज से मैमोग्राफी करना चाहिए और 75 के बाद स्क्रीनिंग शुड कंटिन्यू, बट इट इज मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट और बाकी सब लोगों के पर्सपेक्टिव से मैमोग्राफी एक सिंपल एक्सरे है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट को मैमोग्राफी मशीन में रख के ऊपर से रेज देते हैं एंड देन आपके राइट हैंड साइड पे जो इमेज है उससे वो दिख जाता है कि वो कैंसर किस तरह का है। हम लोगों को सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए अपनी ब्रेस्ट का, बोथ औरतों में और आदमियों में। ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी होता है, 1% ब्रेस्ट कैंसर मैन में होते हैं। तो सिंपल अपने आप को मिरर में देख के कि हमारी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर ठीक है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में, और उसको हर जोन के हिसाब से पैल्पेट करके के अंदर कोई लंप तो नहीं मिल रहा। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो हम स्क्रीन कर सकते हैं वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन 18 साल से पहले हर किसी लेडी को लेनी चाहिए, वुमेन को लेनी चाहिए। 18 साल के बाद 21 साल की उम्र से पैप्समियर करना चाहिए एंड उसकी वजह से हम 90% सर्वाइकल कैंसर को दूर कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है और होने के बाद इसमें क्योर रेट काफी पुअर होता है बिकॉज कैंसर काफी अग्रेसिव होता है। 65 के बाद सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क नहीं होता है। कोलोन कैंसर 45th बर्थडे पे ही आपको कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ये समझ में आ रहा है कि कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये हमारी डाइट से रिलेटेड हो सकता है बिकॉज इतना पेस्टिसाइड्स हम लेते हैं। सो सिंपल स्टूल लोकल ब्लड टेस्ट और कोलोनोस्कोपी ये कोलोन कैंसर स्क्रीन करने में आपकी हेल्प करेंगे। 45 की एज से ही अपने डॉक्टर से बात करें कि कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेटिव्स को कोलोन कैंसर हो चुका है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोलोन कैंसर है, जिनको कोलोन के पॉलिप्स हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिनको बाउल अपसेट रहता है, उनमें कोलोन कैंसर के स्क्रीनिंग का महत्व बढ़ जाता है। 40 इयर्स की एज से वी हैव टू स्टार्ट कोलोन कैंसर और 5 साल में कोलोनोस्कोपी कर लेनी चाहिए, खास अगर आपके किसी रिलेटिव को 60 साल की उम्र से पहले कोलोन कैंसर हुआ है। प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में स्क्रीनिंग का। हम लोग 55 के ऊपर मेन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से डेथ बचती है। ये समझने वाली बात है कि 88 की उम्र तक 8 में से 7 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। 70 की एज तक 3 में से 8 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पेरेंट्स के लिए हमें 55 की एज के बाद एनुअल पीएसए करना चाहिए एंड अगर हम सिर्फ पीएसए करें तो 30% ऑफ डेथ्स प्रिवेंट हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर से। लिवर कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग सिरोटिक लिवर में करते हैं। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है, क्रॉनिक डायबिटीज बढ़ रहा है, उसकी वजह से लिवर का सिरोसिस बढ़ रहा है। लिवर सिरोसिस होने की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है एंड कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। सिंपल अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट स्क्रीनिंग में हम लोग यूटिलाइज करते हैं। उन लोगों को जरूर स्क्रीन करना चाहिए जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या पास्ट में हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जिनको हुआ है या जिनकी फैमिली में मेंबर्स अल्कोहल बहुत पीते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, उनको लिवर का अल्ट्रासाउंड जरूर करना चाहिए। लिवर कैंसर अर्ली स्टेज में क्योरेबल है, एडवांस स्टेज में बहुत मुश्किल है इसको क्योर करना। सो हम बात करते हैं वार्निंग साइंस की। वार्निंग साइंस क्या होने चाहिए कैंसर के लिए। कोलोन कैंसर में बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, गले में सोर थ्रोट हो वो हील ना हो, कुड बी अ पार्ट ऑफ ओरल कैंसर, ब्लीडिंग हो रही हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्रेस्ट में कहीं लंप महसूस हो, खाना निगलने में दिक्कत हो इसोफेगस से रिलेटेड, और कोई स्किन पे मोल हो, वॉट हो वो चेंज ना हो रहा हो, और कफ जो नहीं जा रही हो। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर प्रिवेंशन के लिए फैक्टर्स को एड्रेस करें, अनबैलेंस डाइट को करेक्ट करें, क्रॉनिक इन्फेक्शन से बचें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं एंड स्मोकिंग और टबैको और अल्कोहल यूज को कम करें। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पोल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑक्यूपेशन वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट हैव एन ऑप्शन, सो दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू प्रिवेंट कैंसर। अल्कोहल लिमिट करें,
एक्सरसाइज करें। WHO बोलता है कि 2 घंटे एक्सरसाइज करें पर वीक। सो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि 1 घंटा सैटरडे और 1 घंटा संडे को एक्सरसाइज करें। अपने लिए मोबाइल घर पे छोड़ के जाएं, रन करें, स्वेट आउट करें। दैट्स वन गुड वे ऑफ रिलीविंग कैंसर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लंग कैंसर का इंसिडेंस 30% कम करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ओबेसिटी 30% इंक्रीज करती है रिस्क को। अगर आप डाइट ठीक करें तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से you can decrease the incidence risk of cancer by 40 to 50%. This is what maximum लोग नहीं करते। अभी भी मैं ग्रुप में हाथ खड़ा करके पूछवाऊंगा कितने लोगों ने लास्ट वीक में एक्सरसाइज किया। हार्डली ही लोग होंगे जो एक्सरसाइज करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं बट करते नहीं। एक्सरसाइज का मतलब है कि 1 आवर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें और उतना एक्सरसाइज करें कि आपकी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 10 स्टेप्स बताए हैं। आई थिंक कोई फॉलो करे तो इसलिए हम कैंसर से लड़ सकते हैं। एक तो अपना वेट हेल्दी रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वेजिटेबल फूड्स, फास्ट फूड को कंजम्पशन को कम करें, रेड मीट ना लें, शुगर कंजम्पशन करें, लिमिटेड अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करें, सप्लीमेंट्स ना लें कैंसर प्रिवेंशन के लिए। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कैंसर प्रिवेंशन सप्लीमेंट से हो सकता है। मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें एंड फॉलो करें कैंसर रिकमेंडेशंस को। इंश्योरेंस जरूर लें। तो प्रॉब्लम इज कि लंग कैंसर का कॉस्ट 2000 में अगर एक 1.72 लाख था, 2015 में 4.6 लाख हो गया ट्रीटमेंट का और आज ये 10 लाख के ऊपर है। ओरल कैविटी कैंसर का कॉस्ट जो 1,50,000 था 2000 में, 2015 में 4.3 लाख और 2022 में इट इज अबव 5 लाख। सो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नॉन मेटास्टेटिक स्टेट में 10 लाख का हो गया है, मेटास्टेटिक स्टेट में 50 लाख तक चला गया है। सो एवरी कैंसर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली हाई। स्क्रीनिंग का कॉस्ट बहुत कम है उससे कंपैरेटिवली। मेमोग्राफी का एनुअल कॉस्ट 2000 रुपए है। सर्विक्स कैंसर के लिए स्क्रीनिंग का कॉस्ट 800 रुपए है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए 800 रुपए है। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए 4,500 से 5,000 रुपए है। पर कैंसर होने के बाद या लेट स्टेज में डायग्नोसिस होने की वजह से आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स खत्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाई आई से अपने आप को इंश्योर करें। एक बेसिक इंश्योरेंस प्लान 7,000 रुपए का और 15,000 रुपए का एक रेगुलर हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान आता है। डोंट गिव अप इंश्योरेंस। स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत लोगों ने सीखा है इंश्योरेंस को गिव अप नहीं करना। ये माना जाता है कि अगर आप लोग इंश्योरेंस करेंगे तो यू कैन सेव योर लाइफ, यू कैन सेव द फ्यूचर ऑफ योर किड्स। बिकॉज कैंसर कीमोथेरेपी कॉस्ट 20 लाख के ऊपर जा चुका है। नई नई दवाइयां हैं जो कि आप पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू sort of manage that. So buy some regular insurance plan entire term। और ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट कैंसर में होता है जिसमें डोमिनो इफेक्ट होता है, one leads to second and second leads to falling of the whole family, इसको प्रिवेंट करना है तो उसका सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि हमें कैंसर स्क्रीनिंग की तरफ ध्यान देना है और हमें इंश्योरेंस करना है। So this is from my side. I am open to all questions. मैंने कोशिश की कि मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोगों से बात की। So next 30 minutes आप लोगों के जो भी सवाल है मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। Over to you, Manoj. Thank you, sir. It was a very, very wonderful presentation, and in a very short, but in a very crisp way, you were able to communicate to all of us what is possible and what should be kept in mind. And I have never seen 3-4 things in other presentations, and which I must say that you included that. One is the financial aspect and the financial burden, and how you are able to include that regularly. Being an ex-banker myself, I know how important it is to continue your insurance. And most of the time, you also begin with something very interesting. Say, we are indestructible.
मैं नहीं टूट सकता, और जब कैंसर होती है तो हम टूट जाते हैं, और दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से. सर, I had some simple question for you for the benefit of everyone. बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी में जानते हर लोग हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं, ओबेसिटी गलत है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, लेकिन every talk you feel motivated, and after that slowly and gradually it tapers off, और फिर वापस back to routine. So what advice you have to give to these youngsters कि how they should be persistent and consistent? So मनोज जी, साइंस ने दिखाया इट्स अ मैटर ऑफ 3 वीक्स. अगर आप कोई चीज परसिस्टेंटली 3 वीक्स तक करते हैं, देन इट बिकम्स अ हैबिट एंड बिकम्स एन एडिक्शन. प्रॉब्लम इज हम लेजीनेस को 3 वीक्स से ज्यादा करते हैं. सो अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठ के कॉफी पी के रनिंग के लिए जाएंगे परसिस्टेंटली फॉर 3 वीक्स, आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाएगी उस प्रोसेस के लिए, एंड देन दैट एडिक्शन विच इज अ हेल्दी एडिक्शन विल लीड यू टू बेटर रिस्पॉन्सेस. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेशेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, अपने बर्थडे वाले दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट करो लीज ऑफ लाइफ, टेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं एंड बेटर हैबिट्स लीड होती है. सो सिमिलरली रनिंग है, ओबेसिटी कम करना है, डोंट थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग फाइट, इट्स अ फाइट ऑफ 3 वीक्स. सो 3 हफ्ते अगर आपने कर लिया तो साइंस कहती है, एंड साइंस रेयरली फेल होती है, कि आपको एडिक्शन हो जाएगी उसकी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट ऑफ गो अवे फ्रॉम दैट. So 3 weeks and an addiction for a better one. Choose a better Yeah. addiction. Excellent, sir. Uh, you also touched upon insurance, and you talked about something like 7,000, 15,000 rupees, sir. There is what you see in the current situation is immunotherapy and other drugs. They are very very expensive, sir. So, do you think this is uh, having just a bare minimum insurance is good enough, or would you like to advise them to also have something like a critical illness rider or a cancer coverage? So I am no one to sort of tell people how much you should they insure. I am a oncologist. मेरा ट्रीटमेंट फ्री होता है मेरे फ्रेंड से किसी भी चीज के लिए, मतलब मुझे कुछ भी होता है, आई वॉक अवे फ्रॉम हॉस्पिटल विदाउट एनी बिल्स. बट अगर आप देखिए माई इंश्योरेंस कवर इज बियॉन्ड 40 lakhs, क्योंकि व्हाट वी सी वी आर स्कैर्ड. बट आई एम टेलिंग यू, इतना ज्यादा इंश्योरेंस कवर के बेनिफिट नहीं होता. कैंसर का इंसिडेंस कम ही रहता है, 10 to 15 cases per 10 lakh population. So what I recommend is have a basic insurance plan and sort of screen yourself from cancers. इंश्योरेंस करने का मतलब ये नहीं है कि यू फॉरगेट अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग. फिर भी कैंसर से जीत अर्ली डायग्नोसिस से ही होती है. सो गेट अ इंश्योरेंस प्लान, ट्राई टू सी कि उस इंश्योरेंस प्लान में आपका एनुअल टेस्ट इंक्लूडेड हो, सो दैट चेकअप हो. एंड यू डोंट नीड योर इंश्योरेंस. जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि चाहे मैंने इंश्योरेंस कितने भी करी हो, बट माई कार शुड नॉट गेट बम्प. सो वही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, इंश्योरेंस कितने की भी करें, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट नीड दैट इंश्योरेंस. वो पैसा बेकार ही जाना चाहिए. So I think the first message was extremely important, that you must screen yourself at a regular frequency, and you also highlighted the age. It was also interesting to know that internationally people kind of start at the age of 25. So colon, prostate, cervical, and also you also touched upon the vaccines, especially for the young women. So they are extremely important. So that was a summary of what you said. There is also a feeling, sir, that uh, once the cancer happens in the family, everything is finished. What message you have to tell to those who might have something in the family? I will give you a simple message. No one of us is immune. कितने सारे हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम सबके फैमिली मेंबर्स को कैंसर हो चुका है. मेरी फैमिली मेंबर्स में भी बहुत कैंसर हुआ है. लाइफ डजंट एंड, लाइफ स्टार्ट्स. देयर इज ऑलवेज एन एग्जांपल कि भाई फैमिली में कैंसर हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू वेक अप एंड नॉट एंड अप लाइक दैट. हमें हमेशा कारण ढूंढने चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर को कैंसर क्यों हुआ.
अगर उसका कोई कारण नहीं मिलता है तो हमें ये देखना चाहिए कि जेनेटिकली हम प्रिडिस्पोज हैं फिर कैंसर के लिए. ऑल द मोर रीजन दैट वी शुड अवेकन अप. आप क्राई करके क्रिप करके कुछ होता नहीं है. कैंसर क्यों होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक गन है, गन में बुलेट्स लोडेड है, आपकी बॉडी में भी सेम सिचुएशन है, कैंसर जीन्स हैं. आपके डेली लाइफ उसको ट्रिगर करेगी, प्रिवेंट दैट ट्रिगर फ्रॉम हैपनिंग. एक बार ट्रिगर हो जाता है, बुलेट छोड़ देती है गन को, देन वी ऑल नो व्हाट द आउटकम इज. सो अगर फैमिली में कैंसर होता है, नेगेटिव होने की बजाय उस कैंसर को समझे, उस पेशेंट को सपोर्ट करें और खुद सोचे कि मेरा कैंसर रिस्क क्या है या मेरे को कब जागना है. मैं इमीडिएटली सब रिलेटिव्स को बोलता हूँ कि अब आप तो इंश्योरेंस करा लो एंड डोंट कम टू माय क्लिनिक फॉर द सेकंड कंसल्टेशन अगर जब तक आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, यू नो, बिकॉज इसका पैसा भी आप देंगे और आप लोगों को कुछ हो गया तो फिर हाउ विल द फैमिली कोप अप. सो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू सॉर्ट ऑफ वेकन अप. मेरे एक पेशेंट थे 2012 में जिन्होंने मेरी आई ओपनिंग की थी. ही वाज अ पायलट एंड आई ऑलवेज कोट हिज एग्जांपल. वो 50 इयर्स के यंग पायलट थे. ही वेंट अपने फ्रेंड के साथ यूएस में कोलोनोस्कोपी कराने गए. इंडियन एयर इंडिया के पायलट थे एंड उनको डॉक्टर ने बोला कि भाई आप भी एज क्राइटेरिया में हैं, आप भी अपनी कोलोनोस्कोपी करा ले. ही वाज अ पंजाबी गाय. ही लाफ्ड. ही सेड दैट यार मुझे क्या होगा, आई एम अ पंजाबी गाय. उन्होंने अपनी कोलोनोस्कोपी करा ली. चलो ठीक है यार दोस्त, तुझे डर लगता है, सानू की लोड है, हम भी करा लेते हैं. उनको दोस्त को कुछ नहीं निकला, उनको स्टेज 2 कोलोन कैंसर था. उनका ऑपरेशन हो गया. एंड ही कीप्स कमिंग एवरी 2 years एंड यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग फीलिंग जब वो ये स्टोरी बताते हैं. एंड आई टेल दिस स्टोरी टू पीपल. एंड अगर वो डिले होता है 1-2 साल और देन आई डोंट नो, वो लाइफ कटल हो जाती, वो लाइफ में सफरिंग होती. सो डेफिनेटली यू नो दीज आर द सॉफ्ट थिंग्स व्हिच एवरीवन शुड लुक एट. फर्क Uh, पड़ता है. Bilkul. So I think by this example, all of us are learning that it is not the scare of the disease, but what is important is, say God forbid this has happened, this is caught at such a stage that it is still curable. So being responsible to our health and to our body, it is important that screening and those detection, if God forbid happens, it is at an early stage. Uh, so now I throw it to my colleagues and their families if they have any questions. Anybody has question for sir, please kindly unmute and ask the question. Sir, hi, Amit here. Please go ahead. Yeah, Sir, Amit. please go ahead. Hi Amit, how are you? I'm good, sir. How are you? Sir, Good, yeah. Tell me. sir, actually what I've heard now when I was in South कि जो particularly colon cancer है, as South में कम होता है as compared to North, and the reason behind is a sambar. Because I had any Obesity. comment on because it's Obesity. Indian spices. Obesity. Okay. If you see साउथ में बहुत लोग चलते फिरते रहते हैं. ओबेसिटी साउथ में, चेन्नई में स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. एंड नॉर्थ साइड पे कोलोन कैंसर और ये सब बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. So I think more than the looks, we should watch our abdominal visceral fat, and I think that is equally important. Down north, sir, especially in Srinagar and that belt, we see some specific kind of a cancer more prevalent, and even down south in Kerala region, there are couple of cancers which is very uh, which is much more prevalent than other areas. Does it got anything to do with genetic constitution or It's got everything to do with lifestyle. Again, महाराष्ट्र में ओरल कैंसर बहुत कॉमन है. नॉर्थ ईस्ट में ओरोफेरिंग्स एंड सर्विक कैंसर बहुत कॉमन है हाइजीन की वजह से. ऊपर वेस्टर्न ऊपर अगर हम देखें कश्मीर साइड, वो संगड़ी वगैरह काफी लेते हैं तो स्किन कैंसर और ओरोफेरिंग्स कैंसर कॉमन है. और साउथ में स्पाइसी फूड होने की वजह से, फिश, हाई सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स होने की वजह से कोलोन के स्टमक कैंसर ज्यादा कॉमन है, कोलोन कैंसर ज्यादा कॉमन है. इट कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट we are not born with the genes to kill ourselves. Rarely 1%, 2% population.
द प्रॉब्लम इज दैट 1% इज ह्यूज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बर्डन. तो इसलिए में कैंसर बहुत ज्यादा दिखता है. अगर आप देखें कोविड में 1% लोगों को क्या कहते हैं डेथ होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. बट व्हेन यू सी द नंबर्स टीवी पे, वो बस 1% ही सब chaos क्रिएट करता है, बट 99% को कुछ नहीं होता. सिमिलरली कैंसर में 1% ही जेनेटिकली ड्रिवन है, यू नो, जिसमें जो कैंसर होता है वो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, वो मुझे बाय चांस हो जाता है बिकॉज माय जीन्स आर लाइक दैट. बच्चों में हो जाता है, बट हमारा सारा फोकस उस 1% पे होता है कि भाई बच्चों में भी कैंसर होता है. और जो विंस्टन चर्चिल इतना स्मोक करते थे उनको कैंसर नहीं हुआ. दे आर देयर आर बेटर जीन्स टू फाइट एनीथिंग, बट हमें पता ही नहीं है कि हमारी जीन्स कैसे हैं. हम 99% को भूल जाते हैं कि 99% ऑफ कैंसर इज लाइफस्टाइल ड्रिवन. उसको डील करना है. 1% के लिए कुछ नहीं कर सकता कोई वैक्सीन, कोई फिजिकल एक्टिविटी उसको नहीं क्रिएट बचा सकती है. हालांकि मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो वो 1% को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. मेरे क्लिनिक में रेयरली बॉडी बिल्डर्स आते हैं और रेयरली एक्टर्स जब आते हैं वो ठीक हो जाते हैं बिकॉज दे आर जनरली फिट. अब लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, हालांकि युवराज सिंह इज एन ओवररेटेड एग्जांपल बिकॉज उसका कैंसर बहुत क्योरेबल था. he dropped it out of proportion, but Lance Armstrong, testicular cancer, these cancers इन लोगों को easy cancers होते हैं और ये लोग क्योर हो जाते हैं. Rarely you would see an athlete dying of cancer. Period. News में भी नहीं सुनते. They live a normal life. You know, cricketers, इतने cricketers हैं हमारे पास. Rarely have we heard कि that cricketer has died of cancer. You know, until unless उनको oral cancer हो. So physical activity is the most important thing. Extremely well emphasized by sir. 99% is controllable, 1% is non-controllable, and even if we exercise and keep ourselves physically fit, it makes a lot of difference. So there is also some emerging, uh, you know, like when I wear my iWatch tells me get up every 1 hour and start walking, and it keeps a track of those things. So how much of emphasis you will give apart from exercise to be regularly moving and regularly constantly active after a certain gap if we have a sedentary lifestyle. It is said that our body, when God was making, never thought that we will advance so high, and it was basically moved to protect ourselves. It was made to protect ourselves. So hunters and protection. So we wanted to be always active. So how much of emphasis you will give on that, sir? I'll tell you only one thing. Your body is more evolutionized in terms of nature than a lion. अगर आप lion को cage में रख देंगे, lion will die. अगर आप उसको एक flat में बंद कर देंगे, उसके comparatively उससे एक animal नीचे जाइए, cat can survive. You are much more advanced than lion. जितना ज्यादा दूर आप nature से जा रहे हैं, उतना ज्यादा chances है कि your body is not able to understand कि हो क्या रहा है. आप तो mentally सोच रहे हैं कि you are enjoying, but your body is not enjoying. And these are all the soft signs. Your body tells you, okay यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं कि भाई ये खत्म हो जाए. I am not able to understand this. तो जितना ज्यादा nature के पास जा सके उतना अच्छा है. Try to walk more. पानी भी खुद लेके आए किचन से, rather than shouting and saying कि मुझे पानी कोई पिला दे. Simple things makes a lot of difference. Questions are pouring in. Actually, there is another one where we are tracking questions from the audience. Sir, one more thing. There has been a talk about CAR T cell therapy, and the projections like it is curative, and at the same time, whatever company, including us, are working on it, the cost looks like extremely exorbitant. What comment do you have about the emerging therapy, especially CAR T therapies and immuno-oncology drugs? तो जब मोबाइल फोन इंडिया में आया था, नोकिया का मोबाइल फोन मैंने खरीदा था, 54,000 रुपीज का था. वो एक सिंपल बेसिक सेट, एंड आई यूज्ड टू थिंक इट इज टू एक्सपेंसिव. आज वो सेट 1,000 रुपए का भी नहीं मिलेगा. सो न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है एक्सपेंसिव होती है, जैसे उसका यूज बढ़ता है लोग उसमें इनोवेशन करते, सस्ती हो जाती है. तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज CAR-T बीइंग एक्सपेंसिव. पीरियड. जितना ज्यादा यूज होगा उतना सस्ता होगा. CAR-T इज बेस्ड ऑन अ फिनोमिना कि आपकी बॉडी से टी सेल्स को निकालते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं कैंसर के अगेंस्ट,
कैंसर को उसको दिखा के ये ऐसा कैंसर दिखता है, उसको बॉडी में वापस डाल देते हैं, तो कैंसर को मारता है. इट्स जस्ट स्ट्रेंथनिंग योर इम्यूनिटी. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, immunity fights cancer. Coming back to the point, what boosts immunity is physical exercise. So general public के लिए, that's the message. For the companies, yes, CAR-T is the way forward, but now we have only been able to find out the benefit of CAR-T in limited cancers, like blood cancers or lymphomas or myelomas, but we have not been able to find out benefit of CAR-T in like solid tumor cancer, like breast, colon. There is still no answer. So immunotherapy आ गई है उसके लिए. So if you look at immunotherapy is one dimension for solid tumor cancers and CAR-T is one dimension for liquid cancers. I think in future there will be a fusion. I think we are moving away from chemotherapy, and I keep telling this to my patients. Last chemotherapy detected was in before 2002, and that was Alimta, pemetrexed. उसके बाद कोई chemotherapy regimen ही, chemotherapy drug ही नहीं हुई. So in last 20 years, we are using a technology which is more than 20, 30 years old, and I think it's on a way out. So I tell most of my patients that 5 years down the line, I don't see myself giving chemotherapy. I don't. That's why I say to the companies also, if you are still stuck up on increasing your market of chemotherapy rather than innovating into the molecules that are coming today, I think you are going to phase out of what happened to BlackBerry, never evolved. What happened to Nokia, never evolved. So chemotherapy and BlackBerry, Nokia is the same example, I would say, with a medical oncologist perspective and a company's perspective. So CAR-T, yes, is the way forward. Sir, there is again another interesting question, and there is a reference to Angelina Jolie, and they say that elders in the family were diagnosed with breast cancer, and Angelina Jolie just completely kind of removed her breast, and something similar is there in the family. Marcy has got breast cancer, and they are doing the checkup regularly, but it is advisable in such cases when you have a high relative risk that you should kind of remove your breast itself. So there, in patients with high family risk, there are about 17 cancer genes which may be responsible for causing cancer. Out of them, BRCA1 and BRCA2 are most penetrative. That means if you have a BRCA1, BRCA2 gene, there is a 60 to 70% chance of developing cancer. So Angela unfortunately had one of that gene, and she chose कि भाई मैं अपना breast का structure अंदर से निकाल देती हूँ, so that at least there is a 50-60 risk reduction chance. It does not make her immune to develop cancer. She can develop cancer at any point of time, and I hope she does not, but it certainly reduces the risk of her developing cancer. It's like if you have a car who has a propensity to travel at 240 kilometers per hour. All cars have that propensity, but only few can travel, and you understand that there is a chance that car will be on that highway, so you put the brakes on, so the chances of accidents go down. It's similar to that. So it only happens in conditions where we prove there's a genetic predisposition. It only happens in a condition we prove that there's a high risk of developing cancer. Then we offer this risk reduction surgery. It's not meant for everyone. There's a question on the chat box by Ajay Musharrif, who's based out of Nagpur. At what age in India you would recommend a screening test to be done? Internationally, it is quite early, but what should be the age? 21 for women and 45 for men. So 21, Try to 45. catch cancer and try to catch it early. Sure. I am waiting to turn 45. As soon as I turn 45, the first thing I'm going to do is I'm going to walk to my GI colleague and ask him to do a colonoscopy on me. And sir, what are those tests? So at the age of 21, women should start doing breast self-examination and pap smear. 40 years pe women should do mammography once. For men, 45 पे stool local blood and colonoscopy, and 55 के बाद से PSA. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Any question from? Yeah, Shivam sir, this is Hitesh here from Ahmedabad, sir. Hi, Hitesh. Good morning, sir.
Good morning. Yeah, sir, it was wonderful talk. In fact, we have enjoyed every bit of it, and you have made our Sunday. So this question is regarding mammogram. Sir, is there timing of the mammogram is important? That After especially in context of menstruation timing. no, I mean no. pre-menopause, pre-menopause, or even is there any during the menstruation cycle or post menstruation cycle? If immediately you go for mammogram, is there any impact of variation in the result? So no variation in the result. Mammography is a painful test. Women who have pain during in the breast during menstruation should do it in the time when they don't have pain. Because sometimes women develop sore breast during menstruation. Of course, don't do it at that time. But there's no variation in the result as such. So timing Okay, is not thank you. important. I think doing the test is important. There's one more question in the chat box from Neeraj from Delhi. He asks, what should be the gap between two cervical vaccines? I guess he's referring to So you Gardasil or have two cervical vaccines. One is Cervarix, another is another one. So in one it says 1 month, in other it says 6 months. But I can tell you, I was in Europe and they were presenting Indian data. So what happened was in villages in India, government of India took this trial where they vaccinated the first dose, and because of the fear in the village, because of lack of education, these people never brought them for the second dose because they were thinking ki post Sanjay Gandhi they are trying to make us infertile and giving this vaccine. 99% of the women were still developed इतनी बढ़िया antibodies कि उनको cervical cancer होना ही नहीं था. So even one dose is good enough. So in Cervarix, there is 1 month gap. In other vaccine, it's 6 months gap. It's like Covaxin, Covishield, whatever you choose. But even one dose that you take will sort of prevent you from developing cancer. And ये establish किया European Council ने Indian data से. sir. There is some degree of confusion, sir, also on the age. Some say 9 to 15. Some say that you can also move up to 25. There is also some international data when women have been given even up to 35 to 40. Now, what is your recommendation? So 90% of Indian men will carry HPV virus. Why will they carry? Because they use public toilets and the hygiene is poor. After first sexual contact, giving this vaccine is practically of no benefit because virus has already entered. The usage of this vaccine is to prevent the virus from getting inside the cervix stoma. So genuinely recommended sort of age is that if you are uh, 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 you know sexually active, there's no point. It is below the age of 18. Indian scenario, women can be sexually inactive till 25 also. So what Australia does is it vaccinates both boys and girls at an early age so that you shut out the incidence of HPV. HPV happens in men, doesn't cause any trouble to them, but infects women. So even if you vaccinate boys and girls with HPV, before the reproductive age group, that's why in Europe Europe and US they came up with 11 to 12 years as the age of vaccination because in college most of the children are sexually active, and in India you can stretch it to 21 to 22 years. So, but my take is before marriage, before first sexual contact. I think it's a very, very additional important point of being responsible. And sir very clearly said, if you're responsible, even if you're a male, vaccinate your child. That's a very interesting insights. Okay. Any other question from the team members? Sir, one question. Yeah, Pramod. Yes. Go ahead. Sir, good morning. Pramod here from Jabalpur. Sir, it has been seen that users of hormone-based contraceptive is, like anything. But when I see a cancer awareness poster, it is written over there that it should be like minimum users should be less. So, sir, can you throw some light on this, sir, please? So hormone-based contraceptive is progesterone-based. That doesn't lead to increased incidence of cancer. I am very clearly telling you that. What leads to increased incidence of cancer is use of hormone during the infertility period
and that is because of high estrogen-based treatments. I say that responsible best use of contraception today, which a lot of people in India are using, is barrier contraception, and the use of hormone contraception is going down, especially in educated populations. It's barrier contraception which is coming up. So, but there's no great increased risk of using oral contraception in terms of hormones for cancer. Uh, it's progesterone based and really doesn't increase the risk. Okay, sir. Thank you. Shivam sir, good morning. Yes, sir. Sir, I have one question. Like in cervical cancer, you said the vaccines are there which can prevent it. So, is there any other vaccine which is available which can prevent other type of cancer also, or some research is going on which in future will prevent cancer? Hepatitis B, preventable by Hep B vaccine. Uh, Rarely, no. Otherwise, there is nothing for lung. There is nothing for oral cancers. I wish there was a vaccine for oral cancer. I will take it and enjoy tobacco forever. I wish there was a vaccine to prevent alcohol-based cancers. But I think science will do injustice if they spend or allocate resources to prevent cancers which are caused by our own problems. I would never want a vaccine to be created against obesity. Uh, you know, uh, which prevents obesity-related complications, but let people be obese. I would rather spend resources allocation in eradicating obesity. So we are not for say looking at vaccines for cancer. It's a myth which comes in from time to time, and they say that yeah, we are creating a vaccine against cancer, but never going to happen. Uh, Most of the cancers are lifestyle cancers. So infection-related cancers, we have vaccines, but rest, it's here. We have to start exercising. So, prelude to this question by Amit, is there any age? My colleagues are from 21 to in late 50s as well. So, any age for Hep B vaccine, sir? Hep B vaccine, no age. I think most of the organizations now uh, make it mandatory for your testing for hepatitis B viruses. There's no age. You just check your hepatitis B score. What is the score? And get yourself vaccinated. No age. Keep taking hepatitis B vaccine boosters now also because we are at high risk. You must evaluate your risk of developing hepatitis B infection. If you are not in healthcare profession, your chances of developing hepatitis B infection is low because most of the blood products are screened for hepatitis B infection. All children today are vaccinated against hepatitis B. So the incidence of liver cancer going up because of Hep B infection is going down. Incidence is increasing because of non-fatty liver disease, non-fatty liver cirrhosis, NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. So if you screen your ultrasound, majority of us, you will have a fatty liver because fat has no place to go and now it's using liver as a result. One more question, sir, on something very different. They talk about intermittent fasting and how it has got a effect on autophagy, and especially the last 2 hours of fasting from 14 hours to 16 hours. Body auto corrects itself, and there's a chance that a pre-diabetic will not convert into diabetic, and probably some so-called virulent or mutated cells may get controlled. What's your take on that? I am a student of science. I believe autophagy uh, as a concept is very primitive right now. We don't know the implications of such a concept. There is no way that what Muslims do during fasting is a good thing, which autophagy has proved, but or Hindus fast is a good thing, which autophagy has proved. But I don't know the direct implication on the cancer incidence. So I would not recommend till science establishes that connect. Of course, it's something that has been there in religion, and sort of we are finding scientific basis for that. Has to be useful. I will not recommend it as a student of science because I don't know the direct connect between the two. But yes, there is autophagy per itself is a useful phenomena. We are trying to utilize that process in medicine creation. We are trying to utilize that process in depriving the nutrients
of a cell at a molecular level, not an autophagy of the person, but autophagy trying to create that in the microenvironment of the tumor cell so that the cell dies down. So there are two implications to this process. The general implication people will take is stop eating, go for fasting. A lot of cancer patients stop eating. I think that leads to very dramatic downfall in their health, because that is a message which I don't want to give. If you're a cancer patient, don't do that. It's reverse effect. If you are a normal individual and you are doing it under supervision, it may have a positive benefit. But as a student of science, it's too early for me to tell you anything like that. Uh, uh, another interesting question, sir. What they're saying, मैं मेरे पास खेत है और मैं अपने खेत में खुद ग्रो करना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, you know, no pesticides and only manures and cow dungs, and I would just want to eat that. What is your comment on that? I think you are going back to the nature and it's the best thing to do. पहले नेचर में यही लोग करते थे ना, अपनी खेती खुद ही उगाते थे और उसको खाते थे. तो I think you are doing that, and that's the core message. आप खुद ही उगाओगे तो खुद एक्सरसाइज भी करोगे और खुद का अच्छा खाना भी खाओगे खुद से देख के, और उसको खुद पकाओ भी तो थोड़ी और एक्सरसाइज होगी. That's the best way to go ahead. Everyone should do it. Okay, खुद उगाओ, खुद पकाओ, खुद खाओ. Yeah. Okay, interesting. There are a couple of oncologists, sir, in some of the towns, those who have gone into this special kind of farming, and I find it very interesting. Okay, any other question from our colleagues? Yeah, sir. I have a question. Yes, Arjun. Sir. Yeah. Good morning, sir. Basically, I was reading about a few recent articles and updates in cancer, and I came across this article where they were saying that whales usually they don't get cancer. Whale. And I was reading about this Peters paradox, where they were hypothesizing few studies which you can simulate in human beings also. So, then I kept reading about it, and then I came across hypercancers. So, I mean, it was getting difficult for me to understand the technical science and everything behind it. Can you just tell, like, why is this, and how can it, we can use it in humans to benefit us to prevent cancer? Trust me, my knowledge on that domain will be as much as yours. I believe in going in depth of a subject rather than teaching it offhand. As scientists, we don't know why a lot of animals don't get cancer. Red ants do not get cancer. They keep eating sugar. Whales do not get cancer. My simple two-word explanation would be that they are doing what the nature expected them to do. If nature wanted them to be overweight, they are overweight. But nature didn't expect us to be overweight. Nature didn't expect us to be bound in cubicles. And nature didn't expect us to eat high-calorie diets and work less. So my sort of take here is that they are doing what they're doing. They're in their nature, they're in their pool. Instead of we studying why their body is not developing cancer, and just study the fact that what we can do to improve today and be like them. I think that is my take. And I don't know. There may be some studies which will come in the future. What will be the implication? I don't know. Sir, I have one point to add. As you know that we also have animal business, and we are very, very proud that we are catering down to pets and large animals on behalf of Intas. Arjun, the factory that you see in the animal section of ours, we are also producing drugs for pets and large animals. And recently, there is a lot of international requests for biosimilars and maps that we produce. So we are working on that direction. So probably not studied, but at the same time, we may have something for them as well. But yes, one is a happy news that I never saw any of the pets having COVID. So, that's an interesting piece I just wanted to share. Any other question for sir? Thank you, sir. Manoj, I would like to take your excuse. Really sir, I understand. Thank you so very much. Time
I had a Thank, pleasureful time talking to all of you, and thank you. you've Thank been you. such a kind host, allowing me Thank to you. speak to a lot of people. Thank you, sir. Really appreciate. Thank you so much, sir. Amit, You have a wonderful day. Thank you. Shivam sir, Thank you, thank sir. you so namaste much. to Thank you you so much, also. Shivam sir. Thank you, Amit, Thank both you, sir. Ghosh and Seti. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you. Thank you. And thank And you, you have Team a wonderful Intas. day. I always feel Intas as a family. I hope you have a future like Apple and not like BlackBerry. I hope you innovate and become better at what you're doing. Thank you so Trust much. you me, sir. The day the patent is off, we'll be the first company to have those molecules. The work is on. All the best. Thank Bye-bye. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Manoj, for hosting it so well. Thank you so much. Okay, I innovated a lot of questions. Yeah, Yes. yeah. Okay, bye. Thank Thank you. Thanks. Thank you. Thanks, Ankur, Ashish, Amit. Thanks, everyone. Thanks, bye. Thank you. Thank you, everyone. Bye Bye. 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 Have a nice Bye, Sunday. bye, bye.